তুলে নেই ও কামান টামান ওই বেলুন এখান থেকে আয় আয় বাবা আরে সাবাস কত অস্ত্র শস্ত্র রে চল চল এই ছবিটা দেখতে গেছি ভেতরে এই আগে আয় বসে ও বলো বলো और अभी आप देखेंगे एक हैरत अंगेज कारनामा हमारे माइक्रोलाइट फ्लाइंगर और ये देखिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन सरकार है ओ नाल शाम सोने दलुआ सरदार ओ तन शौक ने पट होड़िए चप्पल मुंडे ने पकौड़े चिट्टे कुड़ियां ब्राउन गड्डियां कालियां नी पकौड़े चिट्टे कुड़ियां ब्राउन गड्डियां कालियां नी मशहूर सच दे गाने खाके कट्टी वालियां नी बल शेर फल तेरा सच दे वालियां नी पकौड़े चिट्टे कुड़ियां ब्राउन गड्डियां कालियां नी दिल सुट दे And 520 Army Service Corps Battalion. This demonstration will feature 10 advanced systems which represent a new paradigm of Atmanirbharta, agility, versatility and logistical support on the battlefield. You see the swarm drones. The swarm drones employed here are the Beluga and Nimbus, in conventional operations, while also performing an ISR sweep of the area ahead of the convoy, marking any potential threats. As you can see, the drones have lifted off and immediately formed a swarm. अब हम उच्च गति से परिचालन करने वाली खोजी वाहन HMR भी देख सकते हैं। ये वाहन तेज
कुशल और दुर्गम इलाकों में अत्यधिक गतिश कर क्षेत्र का खुफिया डेटा एकत्र कर रहा है, साथ ही क्षेत्र की खोज भी कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि HMRV को रणनीतिक स्थान पर तैनात किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, कृपया मैदान के दूसरे छोर पर ध्यान केंद्रित करें। आप देख सकते हैं कि ऑल टेरेन व्हीकल ATV अब क्रॉस कंट्री चल रहा है और फिर वह एक रणनीतिक स्थिति में तैनात होगा जो चल रहे ग्राउंड ट्रूप्स को आवश्यक अग्नि समर्थन प्रदान करेगा। ATV भारतीय सेना की कठिनतम वातावरण में परिचालन तत्परता। Troops are mounted on the SMV and LSV. The vehicles will now stop and you will see the troops dismounting. And there comes the robotic mule. This mule is employed ahead so as to scan the area and warn the moving soldiers. The mule is an autonomous system designed to assist troops. The robotic mule is examining the area ahead of it through various cameras and sensors and has alerted the troops of enemy presence in the near vicinity. We will also see a small carrier behind the troops. This is the tactical load hauler. The troops are carrying the stores required in operation for immediate backup in this load hauler. This will reduce the strain of carrying essential stores, facilitating the troops to focus on operations. Take your attention towards the ground troops, which has moved some distance behind the robotic mule. You can see the Trinetra drone being employed along with the robotic mule. This Trinetra drone from moving column. The ground column has picked up the location of enemy as passed by the swarm drones earlier. With precise move and keeping surprise intact, these soldiers neutralize the enemy. After neutralizing the enemy position, the ground troops are held due to an interfering enemy position in the general area. Red wall ahead of you. To clear this obstacle, drones will carry out bomb droppings. You can see the drones moving ahead with bombs. The enemy position causing interference has been neutralized and the ground column has resumed its advance. हालांकि किसी भी ऑपरेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू लॉजिस्टिक्स है। अब हम देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स रफ टेरेन व्हीकल RTV स्तंभ के पीछे आवश्यक स्टोर और गोला बारूद लेकर चल रहा है। ये वाहन बड़े और भारी लोड्स को सबसे कठिन वातावरण में भी ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्टीप चट्टानी इलाकों में यात्रा करने में सक्षम है और ग्राउंड संचालन को आवश्यक समर्थन प्रदान करता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि एक ड्रोन लोड लेकर चल रहा है जो लॉजिस्टिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाएगा और खराब कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में ताकत बढ़ाने का कार्य करेगा। यह देवी और सज्जनों लॉजिस्टिक ड्रोन है। दोनों प्रणालियां मिलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि सैनिक समर्थित रहें और परिचालन के लिए तैयार रहें। What you have seen today, ladies and gentlemen, is a demonstration of Atmanirbharta and integrated systems working together to create a more efficient, faster and safer operational environment. Each system is designed to complement the others, enabling a force that is more agile, responsive and capable than ever before. Ladies and gentlemen, you would be happy to know that the chief guest for the Vijay Devas military tattoo, the Honorable Chief Minister of West Bengal, has arrived.
Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has arrived. আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছেন আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় of West Bengal at the military tattoo on the occasion of Vijay Diwas 2024. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবেন পূর্বাঞ্চলের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল রামচন্দ্র তিওয়ারি এবং শ্রীমতী গৌরী তিওয়ারি। Honorable Chief Minister is being welcomed by the Eastern Army Commander Lieutenant General Ramchandra Tiwari, Uttamil Seva Medal, Ativishi Seva Medal, Sena Medal, and Mrs. Gauri Tiwari, Regional President Army Wives Welfare Association. Therefore, Mananiya Mukhyamantri ki abhivad skills acquired by a pilot are put to test. While flying low, it demands additional pilotage. Leading the pack is Rudra, or the L8 weapon system integrated, which is an indigenously developed helicopter. Flanked on either side by two Dhruvs, the L8 Mark III, proudly carrying the national flag of India and the national flag of Bangladesh, followed by two Cheetah helicopters carrying the Indian Army and the Eastern Command flag, and thereby followed by the LCH. Today, the flypast contingent is being led by Colonel Anupam Kaushik flying Rudra, with Major Abhishek Mantri, Dhruv to the right, flown by Lieutenant Colonel Saurav Sharma and Major Parajat. Dhruv to the left is flown by Lieutenant Colonel Raju Kehar and Captain P.S. Shekhawat, followed by the Cheetah 1, flown by Lieutenant Colonel A.D. Sharma and Captain Gautam Raj. Cheetah 2, flown by Major Abhishek Rawat and Major Rajat Sharma. Guarding the front. Sarkar astride Pablo, and then Sipahi Sandeep astride Hello King, followed by Salim astride TV, saluting the chief guest in the most unique yet brave manner. Ladies and gentlemen, you can see some props placed in front of you, which you see on a daily basis, like gypsy, motorcycles are caught with mosquito net, a dining table and a wall. But have you ever seen horses jumping these props? Well, today you will see this act of bravery by our elite riders. The first rider on the course is Captain Satyendra of the Army. We successfully done over the table the cord and the motorcycle now. The next rider, an international perform. Major Ithika performing with her horse Ghazi. We started on the course, down the table. The mosquito net coming towards the wall. He does the wall, the motorcycle, and now coming across to the most difficult jump. That's the gypsy jump. That's the gypsy jump. What a fantastic show of precision, coordination and valor. We shall now witness show jumping 6 bars. Unique event. Captain Satyendra clearing all 3. Clearing all 3. There's the first, second, third, and the fourth. Ladies and gentlemen, the height. Here she comes. The first jump, the second, the third, and yes, the fourth. Now it's considered what does the first, the second, the third, and the fourth.
go up again. The height now will be 150 centimeters. Ladies and gentlemen, you're going to witness Colonel Amit Sensinwar jumping live today. He is one of the most experienced riders of Indian Army. Alumni of... He jumps the first one, the second one, the third, and clears the highest fence. Such a marvelous performance. Huge round of applause for these riders, ladies and gentlemen. This technique is used to avoid detection by enemy radar and visual observation. This is being flown by Major Abhishek Rawat and Major Rajat Sharma. Ladies and gentlemen, it requires sheer guts and nerves of steel to go into the enemy area completely unarmed, flying a single-engine helicopter. That is what these brave Cheetah pilots do in operations. They use its small size and maneuverability to their advantage and fly extremely low to avoid radar detection. नीचों दिए हुए आशा खास तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगा लिया है. Ladies and gentlemen, please take your attention to the front. Two teams of attack helicopters comprising of Prachand and Rudra poised to carry out a dive attack onto the indicated targets and deliver devastating amount of firepower to cause maximum destruction. The attack team is led by indigenously developed Prachand helicopters being flown by Lieutenant Colonel Tushar Bhadane, Major Anuj and Major Samit Gadekar and Major Amardeep Chaudhary. প্রচন্ড এবং রুদ্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত হেলিকপ্টার এবং শত্রুপক্ষের উপর বিধ্বংসী আঘাত হানতে সক্ষম হয়. Please look, being flown in by Colonel Anupam Kaushik, Major Abhishek Mantri, Major Nithun Chakrabarti and Major Ujjwal Dwivedi. আমরা দেখছেন যে আরো দ্বিতীয় দল রুদ্র হেলিকপ্টারের আরো দুটি হেলিকপ্টার চলে এলো. তারা এখানে শক্তি বৃদ্ধি করছে. भारतीय सेना बाहिनी युद्धास्त्र सज्जित हेलीकॉप्टर. इन परिस्थितियों में जवानों को स्लिदरिंग के माध्यम से इंसर्ट किया जाता है. We shall now witness a Ghatak team from the 14th Battalion of the Bihar Regiment flown in by the true helicopters of Army Aviation. The Ghatak platoon is led by Platoon Commander Naib Subedar Nitya Naveen. আমরা দেখছেন যে দুটি ধ্রুব হেলিকপ্টার আসছে বিহার রেজিমেন্টের ৪র্থ ব্যাটালিয়নের. এর মধ্যে কমান্ডো নিয়ে আসছেন এরা. The team will be slithering from these two helicopters from a height of 10 to 15 meters above the ground and thereafter attack the enemy bunker to destroy the same. এক এক করে দড়ি বেয়ে এরা এই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন. আমরা জানি যে সব জায়গায় হেলিকপ্টার ল্যান্ড করা সম্ভব হয় না. দড়ি বেয়ে স্লিদারিং করে নামছে. आप देख सकते हैं किस कार्य कुशलता से सभी घातक टीम के कमांडोज और स्पेशलाइज्ड टीम के जवान हेलीकॉप्टर से अपने भारी इक्विपमेंट के साथ स्लिदर करके टारगेट की तरफ टैक्टिकली एडवांस कर रहे हैं.
सबसे पहले टारगेट का पता लगाते हैं, फायर सपोर्ट टीम कवर देते हैं और रेडिंग टीम कमांडो रेड करके दुश्मन को बर्बाद कर देते हैं। Thereafter, this area is completely destroyed by the engineers' demolition team using heavy explosive charges. The troops are being slithered down by the Dhruv helicopters flown by Lieutenant Colonel Saurav Sharma, Major Parijat, Major Rajiv Kumar Chaudhary and Captain Mohit Raj. আমরা দেখছি যে দড়ি বেয়ে এদের নামিয়ে দেওয়া হলো এবং এর আগেই এরা জেনে গেছেন কোন দিকে শত্রুপক্ষ রয়েছে, সেই জায়গার দখল নিচ্ছে। Dhruv is a utility helicopter developed and manufactured by India's Hindustan Aeronautics Limited, Mark III. They have state-of-the-art avionics with glass cockpit and the Mark III. You can see the troops securing their position and preparing to assault the army. And you can see in front the raiding team is facing some resistance from the enemy mortars placed about 5 kilometers from here. Ladies and gentlemen, right in front, 2 Cheetah helicopters flown unarmed into battle by dauntless pilots, Lieutenant Colonel A.D. Sharma, Captain Gautam Raj, Major Shekhar Sanwal and Major P.S. Rathore. They are flying in on 81 mm mortar of the 14th Battalion of the Bihar Regiment to deploy the mortar. The mortar deck of 14 Bihar is being led by Havildar Mahendra. সহযোদ্ধাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য দেখুন মর্টার নিয়ে এসেছে এই দুটি চিতা। 81 মিলিমিটার মর্টার বিহার রেজিমেন্টের বীর জওয়ানরা নিয়ে এসেছে। हमारे সেনাবাহিনীর লোকজনদের মধ্যে একজন আহত হয়ে গেছে। The wounded soldier of 14 Bihar is being evacuated by the Cheetah flown by Major Abhishek Rawat and Major Rajat Sharma. আহত জওয়ানকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে নিকটতম হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ওই দেখুন দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আহত জওয়ানকে। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है, तैयार है। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। ওই চিতা উড়ে চলে গেল আহত সৈন্যকে নিয়ে। The Cheetah is a very reliable helicopter for undertaking recce and observation tasks as well as casualty evacuations.
और जय हिंद। ये म्यूजिक ऑफ करते हैं प्लीज। हमारे मुख्य अतिथि ममता बनर्जी, यहां पे उपस्थित हमारे विशिष्ट गेस्ट और ईस्टर्न कमांड के ऑल रैंक्स, आज विजय दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं आपको और हमारे पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ही दिन वर्ष 1971 जब हमने एज अ नेशन और हमारी सेनाओं ने मुक्ति योद्धाओं के साथ मिलकर समारोह में हमारे साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय श्री ममता बनर्जी जी भी यहां पर मौजूद हैं। आप लोगों को मैं एक बात यहां पर बताना चाहूंगा कि ईस्टर्न कमांड के हर कार्य में, हर क्षेत्र में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और खासकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का बहुत बहुत सपोर्ट और सहयोग रहा है। ये गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल और आर्म्ड फोर्सेस के कोऑपरेशन का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। I'm very grateful to my Lieutenant General of Eastern Command, Mr. Tiwari ji, Mrs. Tiwari ji, all the officials, distinguished guests, friends from both the countries, and also the students, the youth, the journalists, all the people belongs to Indian Army. Thank you so much for giving me this opportunity. We are always proud of our army, Indian Army. They always performed with bravery and with their physical strength and also their moral strength. How they sacrifice their life for the country. I pay my homage on behalf of West Bengal and all the state who represented here on behalf of all the states. We pay our homage to our army people. I compliment the army people who have shown their courage to perform the war-footing performance from aviation to the field. Today you are celebrating Vijay Diwas. আজকে আপনারা বিজয় দিবস পালন করছেন এবং মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন
তাদের মধ্যেও কয়েকজন উপস্থিত আছেন। আমি বাংলার রোল, ইন্ডিয়ার রোল, তাদের ভূমিকা কখনোই ভুলতে পারবো না। We can't remember the people who sacrificed their lives for Bangladesh freedom movement. Though I do not know the present situation, and it won't be proper to me to say anything about it. The matter depends on Government of India and Indian Army. But I must congratulate the Bangladesh Army and our own soul, our heart, our son of the soil, Indian Army. I remember very graceful, in a very graceful manner. I was a student of class 2-3. My father was a freedom fighter. He died only 40 years of his age. But every day he used to tell me how Indo-Chinese war, how our Jawans work, they sacrifice. 1965 Indo-Pak war, how our Jawans, they sacrificed, उन्होंने कितना कुर्बानी दिया था. Same, in the same line, 1971, it was another Pak war to give the freedom to Bangladesh. And I remember लता जी का वन कोटेशन, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसका बाद पंडित नेहरू जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने लता जी को कहा था, लता जी आपने एक गाना गाइए जिसमें हम हमारा जवान को, हमारा शहीदों को हम श्रद्धांजलि निवेदन कर सकती हो. Then it was a famous song of Lata ji that everybody knows. She is no more, but these songs will alive forever. What was the song? Just I want to quote 2 lines. जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी. संगीन पे सोकर माथा, ओ हुए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. आज हम याद करते हैं विजय दिवस पे जो शहीद देश के लिए, एक ग्रेटर कॉज के लिए जिंदगी तो दिया, लेकिन कभी हारा नहीं. आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े और करते रहे. जय हिंद, जय बांग्ला. Thank you very much, ma'am, for your kind words and also for the words of praise for all those who have laid down their lives in the service of the motherland. Thank you very much for having graced this occasion, and thank you for your sentiments as well. Thank you and Jai Hind.